everyone, today we are going to discuss about stages of the fracture healing. So this is the normal bone and this in red color is the blood supply. It is the periosteal blood supply and this is the normal bone without fracture. Let's see the stages of fracture healing in cortical bone. The first stage is stage of hematoma, which lasts up to 7 days. When the bone is fractured, the blood leaks out from the torn vessels in the bone and it forms the hematoma, result in ischemic necrosis of the fracture end and sensitization of the precursor cell. जब किसी हड्डी का फ्रैक्चर होता है, इस स्टेज में हड्डी से टूटा हुआ खून बाहर निकलता है and the sensitization of the precursor cell is that it is the process where the precursor cells, which are immature cells, are capable of differentiating into various type of the cells. So it is the immature cells which will differentiate into different types of the cells. Hematoma, because of these stone vessels, it will form hematoma and result into ischemic necrosis of the fracture end. The fracture end which is present, there necrosis will take place, and because of this there will be sensitization of the precursor cells, and these stage last up to 7 days. So here you can see that this is the fracture end. Here necrosis takes place and there is also sensitization of the precursor cell. So this is the blood vessel which is torn and it result into hematoma. So this is the hematoma. This blood which is present, it is called as hematoma. The next stage is stage of granulation tissue which lasts for about 2 to 3 weeks. This is the stage of granulation tissue. यहाँ पे जो भी प्रीकर्सल सेल होते हैं वो सेंसिटाइज होते हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. ब्लड क्लॉट यहाँ से एक लूज फाइब्रस मैश बनाता है जो कि एक फ्रेमवर्क का काम करता है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और नए कैपिलरीज ग्रो करते हैं. Macrophages, afterwards this macrophages and the giant cell, they will remove the clot. And there is also soft tissue healing में granulation tissue fibrous tissue के साथ replace होता है. Sensitized precursor cells which differentiate and organize and produce blood vessels, fibroblast and osteoblast. यहाँ पे जो precursor cells होते हैं वो sensitize होते हैं एंड वो स्पेसिफिक सेल्स बनाते हैं जो विल डिफरेंशिएट्स इनटू अ ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. सो ब्लड क्लॉट यहाँ से एक लूज फाइब्रस मैश बनाता है जो कि एक फ्रेमवर्क का काम करता है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट और नए कैपिलरीज ग्रो हो सके. फाइब्रोब्लास्ट और द कैपिलरीज ग्रो हो सके. Macrophages, see, the blood clots give rise to a loose fibrous mesh, serves for the ingrowth of the fibroblast and new capillaries. Blood clots is removed by the macrophages and the giant cell. So जो macrophages और giant cell होते हैं वो blood clot को remove कर देते हैं. Soft tissue healing, granulation tissue is replaced by fibrous tissue. So in soft tissue healing, the granulation tissue which is present, it is replaced by the fibrous tissue. In bone healing, granulation tissue further differentiate and creates an osteoblast which subsequently form a bone. So in case of the bone healing, there will be osteoblast which will result into formation of the new bone. But in case of the soft tissue healing, the granulation tissue which is present, it will get replaced by fibrous tissue and healing will take place. Moving on towards the next stage is the stage of callus, which lasts for 4 to 12 weeks. So this is the stage in which the granulation tissue will further differentiate to form osteoblast. So granulation tissue जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट को फॉर्म करेगा. द ग्रैनुलेशन टिश्यू फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएगा टू क्रिएट द ऑस्टियोब्लास्ट बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन. सो मिनरलाइजेशंस ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू.
So after the sensitization of the precursor cell, there will be mineralization. Minerals will come and they will also get deposit, that mineralization of the granulation tissue. Intercellular matrix with calcium salt formation result in the formations of the callus, which is the oven bone. So callus is also known as oven bone. Callus is the first sign of the union on the X-ray, usually 3 weeks after the fracture. So fracture होने के 3 weeks बाद callus दिख जाएगा, which will be the first sign which is seen on the X-ray. So granulation tissue further differentiate हो जाएगा to create the osteoblast, and ये solid structure callus के रूप में दिखाई देता है, which you can see on the X-ray. So you can see callus on the X-ray usually after the 3 weeks after the fracture. So oven bone impart a good strength to the fracture. So this oven bone or the callus which will impart a good strength to the fracture. Callus formation is slower in the adult than in the younger children, and it is also slower in the cortical bone than in the cancellous bone. So callus formation slower है in adult and the cortical bone. So इसमें कैल्शियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है जो कैलस को शेप देता है और फिर ये कैलस ओवन बोन में कन्वर्ट होता है. So in this stage of callus formation there is mineralizations of the bone, that is calcium salt formation, further differentiations of the granulation tissue to create the osteoblast. कैलस एक सॉलिड रूप में दिखाई देता है जिसमें कैल्शियम सॉल्ट फॉर्मेशन होती है एंड दिस विल गिव द शेप टू द फ्रैक्चर. नेक्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग. Oven bone is replaced by the mature bone. So the oven bone which is present, it will get replaced by the mature bone. Laminal bone formation by multicellular unit based remodeling of the callus. So outline of the callus become dense and sharply defined, and this is a slow process which takes anywhere from 1 to 4 years. रीमॉडलिंग का ये स्टेज है जिसमें ओवन बोन को मैच्योर बोन से रिप्लेस किया जाता है. कैलस का रीमॉडलिंग होता है जिसमें मल्टी सेलुलर यूनिट के थ्रू लैमिलर बोन बन जाता है. लैमिलर बोन यानी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड बोन. सो कैलस का शेप धीरे धीरे डेंस और अच्छी तरह से डिफाइन हो जाता है. ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और इसमें 1 से 4 साल लग सकते हैं, लेकिन जब ये कंप्लीट होता है तो हड्डी फिर से अपने नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाती है. सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट देर इज़ अ रीमॉडलिंग ऑफ द बोन. द ओवन बोन विच इज़ प्रेजेंट, it has replaced the bone into a mature bone, and there is a lamellar bone formation. The last stage is the stage of modeling. So bone is gradually strengthened. Modeling of the endosteal and periosteal surfaces of that fracture site become indistinguishable from the parent bone. So modeling के स्टेज में हड्डी धीरे धीरे मजबूत होती है. यहाँ पर एंडोस्टियल जो बोन के अंदर का सरफेस है, वी कॉल इट एंडोस्टियल, और पेरियोस्टियल जो बोन का बाहर का सरफेस है. सो मॉडलिंग ऑफ एंडोस्टियल एंड पेरियोस्टियल सरफेसेस सो दैट द फ्रैक्चर साइट बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पेरेंट बोन. सो ये बिल्कुल सेम पेरेंट बोन की तरह दिखाई देगी. अगर ये पेरेंट बोन है और ये फ्रैक्चर्ड बोन है, सो देखिए ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के सेम लग रहे हैं. सो यू कैन सी इन दिस स्टेज. So this is the modeling stage in which it is the fractured bone is looking similar to the parent bone, almost similar to the parent bone. The first stage is the stage of hematoma. Second stage is the stage of granulation tissue formation. यहाँ पर आप देख सकते हैं granulation tissue formation हो रहा है. And third stage which is the callus formation. See, this is the callus formation which you will able to see 3 weeks after the 3 weeks on the X-ray. And the fourth stage, which is the stage of the remodeling,
in which there will be the oven bone which is present. It will convert into a hard bone, a lamellar bone, and the strength will also increase. And the fifth stage is modeling, in which it will the fractured bone which is present, it will look similar to that of the parent bone. So that is the fifth stage, and the strength of the bone will also increase. Healing of the cancellous bone. So till now we have seen the healing of the cortical bone, and I've already told you that the healing of the cortical bone is much slower than that of the cancellous bone. So cancellous bone healing is little faster. So bone is a uniformly spongy texture and has no medullary cavity. So what does this mean? तो ये जो बोन है ये यूनिफॉर्मली स्पॉन्जी टेक्सचर का होता है और इन कैंसलस बोन में देर इज़ नो मेडुलरी कैविटी विच इज़ प्रेजेंट. लार्ज एरियाज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रेबिक्यूले. सो व्हाट डज दिस मीन? जो बोन के बीच में ऐसे ट्रेबिक्यूलेज होते हैं. सो इन कैंसलस बोन देर आर लार्ज कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस ट्रेबिक्यूले. सो union can directly takes place between these trabeculae. So union will takes place directly between the trabeculae. If this is the fracture, so union will directly like this takes between the trabeculae. Subsequently, the hematoma. So there will be subsequently hematoma formation, granulation formation, mature osteoblast which will be laid down oven bone. So the mature osteoblast which will lay down the oven bone. Oven bone is what? Cancellous bone. First one there will be hematoma formation, then granulation tissue formation, and the callus which is present, or the oven bone which is present, which will laid down by the osteoblast to form the mature bone. Intercellular matrix and two fragments will unite. So these two fragments which are present, this is how they will get unite. So proceeding towards the next slide, that is primary and the secondary bone healing. So there is a difference between the primary and the secondary healing. So in primary healing, it occurs where the fracture hematoma has disturbed, and secondary healing will occurs where the fracture hematoma is not disturbed. So this primary healing, it can be treated operatively, whereas the secondary healing, it can be treated non-operatively. So here in primary healing, it can be treated operatively. Why? Because the fracture hematoma is disturbed. Bone heals without callus formation, and it is difficult to evaluate the callus on the X-ray. In secondary healing, the healing will takes place by callus formation and can be evaluated on the X-ray, and also it occurs in an operated fracture without disturbing the fracture hematoma. So for example, in comminuted fracture. So you can see in this diagram that this is the normal bone which is present. So if suppose of this normal bone there is a fracture, अगर इस normal bone का fracture हो जाए, so from the torn blood vessels the blood will come out. So this is the blood which is coming out from the torn blood vessels, which forms the hematoma. So after the hematoma formation, so there will be granulation tissue formation. So ये हेमाटोमा फॉर्मेशन सिर्फ 7 दिन तक रहेगा. सो इन ग्रैनुलेशन टिश्यू यहाँ पे जो प्रीकर्सर सेल्स है वो सेंसिटाइज हो जाएंगे और ये ब्लड वेसल्स, ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म करेंगे. एंड द ब्लड क्लॉट विच इज़ प्रेजेंट, they will form a loose fibrous mesh. They will act as a framework जिसमें कि फाइब्रोब्लास्ट और न्यू कैपिलरीज ग्रो करेंगे. द मैक्रोफेजेस विल रिमूव दिस ब्लड क्लॉट्स आफ्टरवर्ड्स. सो वी हैव सीन दैट सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कैन टेक्स प्लेस बाय fibrous tissue, and the bone healing takes place by formation of the osteoblast, which will helps in the formation of the new bone. So the next stage is the callus, in which the granulation tissue will further differentiate to create a osteoblast. So the granulation tissue जो है वो further differentiate करेगा to form the osteoblast, और ये एक solid callus के रूप में दिखाई देता है जिसमें calcium salt formation होगा, mineralizations of the bone होगा. Because of these mineralizations of the bone,
जो कैलस को एक शेप देती है और फिर ये कैलस वोवन बोन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस कैलस यू विल एबल टू सी 3 weeks आफ्टर द फ्रैक्चर. रीमॉडलिंग का ये स्टेज है जिसमें ओवन को मैच्योर बोन से रिप्लेस किया जाता है. सी, इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अ मैच्योर बोन. लैमिलर बोन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस. सो कैलस का रीमॉडलिंग होता है जिसमें मल्टी सेलुलर यूनिट के थ्रू लैमिलर बोन बनता है. कैलस का शेप धीरे धीरे डेंस और अच्छी तरह से डिफाइन हो जाता है. लास्ट इज द मॉडलिंग स्टेज आफ्टर द रीमॉडलिंग स्टेज. सो इन मॉडलिंग स्टेज हड्डी धीरे धीरे मजबूत होती है और यहाँ पर एंडोस्टियल और पेरियोस्टियल सरफेस का मॉडलिंग हो जाता है. सो जिससे कि द फ्रैक्चर्ड बोन विल लुक सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट बोन. सो यू कैन सी it is almost looking similar to the parent bone. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.